So ready. So the recording has started, ladies and gentlemen, and the topic which we are starting today is the network layer. The question may arise why we want to study the network layer. Very, very important layer. The answer is that we have seen the TCP/IP suite on which the whole internet is. TCP/IP suite. We have seen it. We have read about it. That's the reason I use the word seen, because we use the packet tracer and we use the Wireshark, and in both the study tools we have seen all the 5 layers. So we know that all the 5 layers, priorly probably we were only knew that there is a TCP/IP suite, but now we have seen it, we understand it, that there is a 5 layers model. And this complex task has been divided into these 5 tasks, starting from the application layer, then is the transport layer, then is the transport layer, then is the network layer, and below the network layer is the data link layer, and below the data link layer we have the physical layer. So gentlemen, further we knew that in the last chapter we have seen that a data link layer has been further subdivided into 2 sublayers named as LLC, logical link control layer, and the MAC layer. So we have seen that the basic task of the LLC layer, which is a software layer, is a sandwich between the software, which are the above layers, these above layers, and the below hardware, where it comprises the MAC layer, MAC sublayer, and the physical layer. Both are the hardware part. So LLC is a sandwich, is a you may say is a layer which communicate between the software and the hardware. Right? We have seen also that the most important part of this MAC layer is its MAC address, which you also called as which is a 48-bit address, which you may also call as the physical address, which you may also call as the burnt-in address. So this is a 48-bit address which is used in the local area network to communicate, which facilitate the communication between the 2 hosts. Now gentlemen, we are interested today to start with the network layer, which means here, where the most important part is the IP layer, IP version 4, IP version 6. We may also talk about the ICMP. We may also talk about the ICMP version 6. We may also talk about the ARP. So this is something important parts of the network. Mostly I use the words that it is like the brain of your computer. Like if a person has a good brain, definitely everything for him is good. And if the brain is not functioning properly, you can understand that everything is wrong there. So this is like the brain heart of human body. Right, Ilyas, Arsalan, and Asif? Yes, sir. Nice. So Yes, sir. what are the gentlemen? Okay, now gentlemen, the topics which we have to cover in the chapter number 8. First is the characteristics of this layer, which means what it provides to us. By us means to the host. It means how the network layer uses IP protocols, which is IP version 4 and IP version 6, as you know, for a reliable communication. However, let me tell you that the job of the IP protocols is not reliable communication. ठीक है? इसमें मैं explain करूंगा. Then, gentlemen, we'll be talking about the IP4 packet, which means, as I said earlier, many times I said about the encapsulation. I talked about the encapsulation.
And in encapsulation, whenever a packet, whenever the payload moves from top, which means the application layer, to the physical layer, every layer adds its own header to this payload, and that phenomenon is called encapsulation. So we want to see in this module how the IP version 4 adds its own header, which means perform the encapsulation, and how many bits long, how many bytes long is the header of this IP version 4, and what is the functionality that is important. What is the functionality that is being provided by this header? So that's the reason this chapter becomes very, very important to understand. Then is the definitely I will explain to you. One of the question might arise in your brain is that if we have the IP version 4, then why we shifted to the IP version 6? That is a valid question. कि अगर हमारे पास IP version 4 का एड्रेसिंग स्कीम मौजूद है तो हम क्यों IP version 6 की तरफ जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं या इन प्रोग्रेस है? So that is a very, very important question to answer, right? That's the reason I will be explaining you the header of IP version 6 then. Header of version 6 then. Definitely these are two different protocols. They will have different headers. So we will be talking about the header of the IPv6. Then we will be talking about how the important work, one of the most important work of this layer is routing. Of this network layer is routing. And let me tell you that routing means finding best path between source and destination, between any source and any destination. That is the routing, finding path. However, in the next course, which is next and next to next as well, which is the switching, routing, and wireless essentials, and the third one is the enterprise networking, security, and automation. In these courses, we will be talking a lot about the routing. And I will tell you at that time, inshallah, that routing can be static, routing can be dynamic, right? So here is the question, just the beginning, that how a host routes. For example, if my computer is generating packets presently, yes. So how they are reaching to Arsalan? How they are reaching to Ilyas, Asif? That's an important question. So my host is routing, or the routers on the way is routing the packets generated by my computer, and they are reaching to your computer. So that's the reason how network devices, and let me tell you that we have three types of devices, network devices. Number one is the end devices. Number two is the intermediate devices. And number three are the security devices. Security devices. So in the intermediate devices, we have routers. And the basic job of the routers is, as I said, to find the best path between source and destination. So our goal is how network devices use routing tables to direct packets to the destination network. As I said here, destination. So every router, we will, inshallah, in the next courses, we will see that every router develops its own routing table. Its own routing table. And it uses the routing table to facilitate the host, the end devices. And what is the facilitation? It tells the packets the best path between the source and destination. And the last topic of this is the routers, as I said, routing table.
So routing table is a data structure which is on the go, is developed by the routers, and it is used, as I said earlier. So the function fields of the routing table of a router. So we'll see what is a routing table, and where there you will find it in the routers. Is it right? So gentlemen, Jihad, we just started the topic, which is the network layer, and I explained that this layer is very, very important to understand. And I said that in this topic, or in this module, I will be discussing with you these 5 topics: 1, 2, 3, 4, and 5. So number 1 is the characteristics of the network layer, what this layer performs. Number 2, I showed you in the last slide that in the network layer we have IP version 4 and IP version 6. These are the 2 very important protocols, and these 2 protocols definitely, as I said earlier, that whenever a packet is generated, the data is generated by the application layer, the packet will move down, which means from the physical application layer to the transport layer, from the transport layer to the network layer, to the network, from the network to the data link layer, from the data link layer to the physical layer. And every layer will add its own header to the payload. Add header to the payload. And adding, as you know, that adding the header to the payload, that phenomenon is called encapsulation. So what is the objective? That how the IP version 4 and how the IP version 6 encapsulates the payload. And definitely when it is adding the header, as I said earlier, it is adding the header, no doubt every byte in the header will have certain meaning, will have certain functionality that need to be explained. Okay, so that's the reason I said here that I will be explaining you IP version 4 packet. I will be explaining to you IP version 6 packet, and then I will be explaining to you how the routers develop their routing tables, and these routing tables are used by the packets to and these routing tables are used by the routers and helps the packets to be directed towards the destination. So that's the reason the 4th number topic is how a host routes, how a router routes. And we will see, inshallah, in greater depth in the later course that these routing tables have 3 types of routes. One is that, for example, if this is the router R1, now this router has certain interfaces, which means may I call them directly connected neighbors, may I call them directly connected networks. So you will find that there are entries in the routing table which are because of the directly connected neighbors. Number 1. Number 2, we will see that in some cases the administrator may add certain routes to the router, to the routing table of the router, and we call them static routes. And number 3 is, gentlemen, is the routes which are obtained automatically.
and we call them dynamic routes. We call them dynamic routes. A dynamic routing. Dynamic routing. And as I said in the next courses, especially the enterprise networking course, you will see these dynamic. You will study these. You will implement these dynamic routing protocols. Like, for example, OSPF. You may have heard the name, Open Shortest Path First. You will talk about the RIP, Routing Information Protocol. You may have heard about the EIGRP. You may have heard about the BGP. So these are some of the routing protocols. The first three are called the Interior Gateway Protocols, IGPs. And the last one, which I showed here, is called the Exterior Gateway Protocol. Does it make sense, ladies and gentlemen? I hope that आपने ये चीजें theory में भी पढ़ी होंगी, लेकिन here you will see them in greater depth. And the objective will be not to read it only, but to see it. That is important. जी, है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? No, sir. Okay, Arsalan. Then we come to the first part of this module, as I said earlier, which is the network layer characteristics. Network layer characteristics. So as I said earlier, that whenever you are on the network layer, whenever you are here, network layer, the important is that here you will find either the IP version 4 or IP version 6 or both. So your first question definitely is that when the IP version 4 is there, why we went for IP version 6? And what is the major difference between the two? So gentlemen, the answer is that as you know that your IP version 4 address, is 32-bit long. 32-bit long. Even if you can check your own IP address and I can show my IP address to you here. For example, if I close this, because if I don't have this IP address, gentlemen, communication will never be possible. Communication will never be possible. Communication will never be possible, right? So let me show you here. I go to the command prompt, CMD, and I do ipconfig/all. So you can see here, gentlemen, that my machine has an IP version 6 address, which is this one. 2400:11B:11B:8300:1. We will study that in the later part because it is IP version 6. This chapter is mostly about the IP version 4. And you can see here IP version 4 addresses as well. 192.168.18.6. So how I can say that it is 32 bits? The answer is each of this is an octet. Each of this is an octet. This is an octet. 192 is a byte, is an octet. 168, and a second octet. 18, the third octet. 6, the fourth octet. The 4 octets. So you know, all of you are engineers. Octet means 8 by 8 bits. Octet means 8 bits. So that's the reason I always say that it is 32 bits, but we write it in the decimal form, which we call as dotted decimal notation. Dotted decimal notation. One thing I should make it clear again, that I am using the Zoom. Zoom is very good, nice.
I accept this, but one issue it has, that it gives us a 40 minutes time limit. So after 10 minutes, my connection with you will break. But don't go away. I will send you the link again on WhatsApp. Join us as quickly as possible so that we may not lose the time. Already I understand कि आपका time बहुत कीमती है, because एक तरफ आपके एग्जाम्स हैं, दूसरी तरफ आप क्लास भी ले रहे हैं, तो we understand कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने सोचा कि क्लास भी ले ली जाए. Okay, gentlemen. So now it is very clear that you have an IP address 192.168.18.6, another IP address 192.168.18.1, another IP address you can see here somewhat similar, exactly similar, 192.168.18.1. I will explain all of these things, that what these addresses are. No problem. So gentlemen, let me explain to you that as you saw that your IP address is of 32 bits. Can anyone give me a short answer? If I have 3 bits, just to make it simple, only 3 bits, how many combinations are possible? How many combinations are possible? 6. No, gentlemen, 2 power 3, which is 8. 2 power 3, which is 8. And I can give you 8. Okay, nice that you understood it. I can give you here a demo, simple, not a demo. If it is 01, 01, 01, 01, it is 0011, 0011, 000011, and 1. So you can see, count them. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So whenever we have 3 bits, as you can see here, you can see, देखिए एक दफा 000 आया, फिर 000 नहीं है. अगर एक दफा 001 आया तो दोबारा नहीं है. So that's the reason I'm saying that uniquely you have 8 different combinations. But if I have, as I said earlier, that your IP version 4 is of 32 bits, this means that you can have 2 power 32 unique combinations. Is it right? When you understood this, that when there are 3 bits, with the 3 bits you have 8. So which means how you got this 8? 2 power 3. 2 power 3. Similarly, gentlemen, when you have 32 bits, you have 2 power 32 combinations. And that is, if you use the calculator, you will get 4.3 billion. 4.3 billion addresses. But now, the number of devices are more than, in November, probably you know that in 2022, November, the population of the world will become approximately 8 billion. 8 billion, it means 8 into 10 is power 9. But the devices which we have are more than 20 billion. Devices are more than 20 billion. And at the end of this decade, this number will rise to around 60 to 70 billion. 60 to 70 billion. So even today, when we have 20 billion, more than 20 billion devices, you understand that this 4.3 billion addresses are not adequate.
this 4.9 billion addresses are not enough, है ना? आपके पास एड्रेस जो है वो 4.3 है और आपके पास डिवाइसेस 20 हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 4.3 5 टाइम्स तकरीबन कम है इस वजह से। और आप कहेंगे भाई हमने रखा क्यों? वजह इसलिए कि इनिशियली जब इंटरनेट बन रहा था 1980s में, तो किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि हमें, इस वक्त तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका मकसद ये था, जिसके लिए फंडिंग जो थी वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की थी, यूएस की डॉट, जबकि मकसद मेन ये था कि एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए बिटवीन दी रिसर्चर्स, बिटवीन दी यूनिवर्सिटीज, जो कि अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिसर्च एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ताकि रिसर्च को इंक्रीज किया जा सके, और वो हुआ। लेकिन आफ्टर 1989 जेंटलमैन, टिम और इसकी टीम ने वेब के बारे में डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? वेब। और हमें HTTP मिल गया, और जो ही ये HTTP मिला, जो ही हमें ये HTTP मिला, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मिला, हमारी जिंदगी ही बदल गई। अब आपका जो इंटरनेट है वो सिर्फ रिसर्चर्स का नहीं है, सिर्फ एजुकेशनिस्ट का नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, उससे ज्यादा इसको लेमैन इस्तेमाल करता है, इसको लेमैन इस्तेमाल करता है। आप देखते हैं कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, बिलियंस में इनके यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि इसके बाद इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। इसमें क्या हुई? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई बशीर, जिसकी वजह से नंबर, जो कि इनिशियली सोचा भी किसी ने नहीं था कि बिलियंस में पहुंचेगा, वो वाकई बिलियंस में भी पहुंचा और बिग नंबर्स की तरफ भी चला गया। इस वजह से हमें फील हुआ कि आईपी वर्जन 4 कम पड़ गया। हम आपसे फिर इस पे डिस्कशन करेंगे फर्दर, लेकिन वो अगले उस पार्ट्स में करेंगे कि इसके लिए फिर हमने एक तरीका ये था कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जो कि आईपी वर्जन 4 को ही इस्तेमाल करता रहे। हमने DHCP निकाला, हमने नेट निकाला, हमने पैट निकाला, वी विल टॉक अबाउट देम, नो वरीज। लेकिन साथ साथ हमने आईपी वर्जन 6 पर भी काम करना शुरू कर। और आईपी वर्जन 6, जिसका मैंने यहां बताया कि आईपी वर्जन 432 बिट है, तो आईपी वर्जन 6 128 बिट लॉन्ग है, 128 बिट लॉन्ग है। इसका मतलब है कि 2 पावर 128 एड्रेस इज पॉसिबल, विच आर 10⁻38। ये क्या है? 10⁻9। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की तरफ आ जाऊं, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की तरफ आपको लाना चाहूं, तो जेंटलमैन, the exact answer will be, you can see here, if I go to the calculator, and you can see here, yep, it is 2 की power 2xy 128. Check it, how much it is? 3.4 into 10⁻38. 3.4 into 10⁻38. जबकि अगर ये 32 जब था तो 2xy 32, it is, as I said, it is not 4.3, it is 3.4. Sorry, yeah, it is 4.3 billion. You can see here 4.3. Okay, so gentlemen, you can see here
that when it was only 32 bits long, it is 4.3 billion. And when it became 2 to the power 128, you can see here that the number became 3.4 into 10 to the power 38. Very big number as compared to the previous one. You understand कि अगर एक 10 की पावर इंक्रीज हो जाए, यानी मिसाल के तौर पे अगर 2 की पावर 3, जैसे अभी हमने कहा 2 की पावर 3 कर रहे हैं 8, जो ही हम 2 की पावर 4 करते हैं इट बिकम डबल, जो ही हम 2 की पावर 5 करते हैं इट बिकम्स डबल ऑफ द प्रीवियस. तो आप खुद अंदाजा करें कि जब 32 से 34 हुआ, 32 से 33 हुआ, 33 से 34 हुआ, तो जो जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. अगर हम अब किसी भी चीज को, हर चीज को, इन अदर वर्ड जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम हर चीज को भी आईपी देना चाहें, वी हैव प्लेंटी ऑफ आईपी एड्रेसेस फॉर अस अवेलेबल टू अस नाउ. बात समझ आ गई? तो ये तो एक रीजन था कि जो मैंने कहा कि आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 आर द प्रिंसिपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स. प्रिंसिपल, मेन. तो क्या क्या इनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं? एक तो ये एड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी नाम प्रोवाइड करते हैं. अगर ये आईपी ना होता, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे कंप्यूटर का आईपी 192.168 समथिंग था, 18.6 प्रोबेबली, ये देखें 192.168.18.6, अगर ये ना होता तो मैं आपसे कभी भी बात ना कर सकता, मैं आपसे कभी भी बात ना कर सकता. इसी तरह अगर आप भी ip config/all करें, you will find a different IP address. You will find a different IP address. आगे जाके हम देखेंगे कि ये IP addresses प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं. क्यों हमने प्राइवेट बनाए, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक. तो जेंटलमैन, हमने कहा कि पहला काम ये इसका ये है कि प्रोवाइड योर नेम, एड्रेस. Number two, it adds a header. This network layer adds a header. और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि adding the header is equivalent to encapsulation. और अभी आप देखेंगे कि मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर ऐड होता है, 20 बाइट्स का हेडर ऐड होता है. हर एक का मकसद है, एक्सप्लेन करेंगे. याद रखो कि साइंटिस्ट कभी भी कोई चीज बेकार नहीं डालता. बाय बेकार आई मीन विदाउट रीजन नहीं ऐड करता, क्योंकि उसको पता है कि एक बाइट तो बड़ी बात है, एक बिट भी अगर कम की जा सकती है तो इट विल बी सेविंग दी बैंडविड्थ. लेकिन जब नहीं गुजारा तो देन वो कहता है ठीक है जी, इससे कम पे गुजारा नहीं है. So it adds a 20 bytes header and the phenomenon is called encapsulation. Then I explained to you in the previous slides that it has a very important function of routing. It has a very important function of routing or routing in finding the best path. क्योंकि अगर ये पाथ ना होता between the source and destination, तो फिर तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स ही रह जाते. फिर तो सिर्फ यानी कि जिस तरह के आप मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ के जरिए दो कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, बस यही होता. क्योंकि बेस्ट पाथ की फंक्शनैलिटी मौजूद है, यही वजह है कि अब मैं पेशावर में बैठा हुआ, हो सकता है आप में से कोई क्वार्ट में हो, दी खान में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, किसी भी कंट्री में हो, वी कैन टॉक, नो प्रॉब्लम. दैट इज बिकॉज ऑफ दी राउटिंग. इसलिए दैट इज a very very important point to understand. And then comes the
अगर यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेट किया है यानी कि हेडर ऐड किया है तो लाजमी तौर पे हेडर को रिमूव भी करना होगा, हेडर को रिमूव भी करना होगा, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन, डी-इनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन, जो मर्जी कहें। बात समझ आ रही है जेंटलमैन? Yes, sir. Nice. So these are some of the Yes, sir. shabash. These are some of the very important addressing. नाम, इसी तरह adding header, removing header, and by using certain processes finding the best path between the source and destination. While these source and destination may be thousands of kilometers away from one another. So these are some of the characteristics of the network layer. Network layer. Okay. So, as I said earlier, कि encapsulation क्या चीज है, मैंने बताया आपको कि encapsulation ये है कि अगर आपने, मैं बार बार आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, अरसलान एप्लीकेशन लेयर है, उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर को दिया या इंटरनेट लेयर को दिया, जो मर्जी नाम रख लें, तो क्या होगा, एप्लीकेशन अपना पेलोड ट्रांसपोर्ट को देगा और ट्रांसपोर्ट उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अब क्या होगा, ये सारी के सारा एज ए पेलोड नेटवर्क लेयर को मिल जाएगा और नेटवर्क लेयर अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देगा, यानी एनकैप्सुलेशन। तो यही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आईपी एनकैप्सुलेशन क्या है, कि आपको एप्लीकेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया, उसने अपना हेडर ऐड कर दिया, और अब हम इस सारे को क्या नाम देंगे, सेगमेंट। अगर ये टीसीपी का हेडर है तो हम इसको नाम देंगे सेगमेंट, और अगर ये यूडीपी का है हेडर तो फिर हम इसको नाम देंगे यूडीपी डेटाग्राम। फिर हम इसको नाम देंगे, फिर हम इसको सेगमेंट नहीं कहेंगे, फिर हम इसको यूडीपी डेटाग्राम कहेंगे। अब जब ये, चाहे वो सेगमेंट है चाहे वो यूडीपी डेटाग्राम है, वो नेक्स्ट लेयर के पास आएगा, दिस होल विल बी कंसीडर्ड एज अ डेटा। यस आसिफ, यू हैव अ क्वेश्चन एंड आई एम लिसनिंग यू। सर जी, सर आपने बात की कि सर एक लेयर से दूसरी लेयर जाता है तो वो अपना हेडर ऐड कर देता है उसको। जी बिल्कुल। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जब ये सर उसका वो पिछला वाला हेडर वो उसे मुझे और ये नया वाला हेड हो जाएगा? नहीं आसिफ, पहले वाला हेडर मौजूद रहेगा। देखिए ना, मैंने अगर इसी वजह से अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मैंने यहाँ पे इस पूरे के पूरे आइटम को, देखिए इस पूरे के पूरे को यहाँ लेकर आ गया, देखिए नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, ये इसके अंदर ऊपर का हेडर भी मौजूद है, ये जो हेडर है ये यहाँ पे मौजूद है, और हमने एक और हेडर इसके साथ ऐड कर दिया। तो ये नहीं कि पहले वाले ने हेडर ऐड किया, दूसरे वाले ने उसका हेडर रिमूव कर दिया, नहीं, क्योंकि इसका मकसद है, और इसका मकसद उसको समझ आएगा जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जब ये दरमियान के राउटर्स के पास जाएगा, उसको कहता है, इसकी हमें समझ आएगी कि इसकी जरूरत है। अदरवाइज अगर एक लेयर ने ऐड किया दूसरी लेयर ने रिमूव कर दिया तो फिर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐड करने की आसिफ जरूरत ही नहीं है। दैट्स गुड, यू अंडरस्टूड नाउ, दैट्स गुड, बट क्वेश्चन इज गुड कि आपको समझ आया कि हेडर की तो अभी मकसद, उसका फंक्शन अभी हमें सामने ही नहीं आया कि हेडर हमने क्यों ऐड किया। तो हेडर की जब समझ हमें उस वक्त आएगी जब वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा, जब वो अपने, और कुछ आपने लास्ट चैप्टर में देखा भी, आपके हेडर के ऊपर सोर्स का मैक एड्रेस, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा होता था।
अगर ये रास्ते में कोई रिमूव कर देता तो पता ही नहीं चलता कि इसकी डेस्टिनेशन कौन है। दैट द रीजन इट मस्ट बी देयर। जब तक कि इसका मकसद पूरा नहीं होता इट विल नॉट बी रिमूव्ड। हाँ, जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा देन इट विल बी रिमूव्ड एंड देन इट विल बी कॉल्ड de-encapsulation. Now got it, Asif? Good. Okay, but it is nice कि आप क्वेश्चन करते जाएं। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको एक चीज समझ नहीं आ रही तो उस पर खामोश रहना कहीं भी एक अच्छा तरीका नहीं है। और नंबर 2, ये आपकी वीडियो जो है ये आपके बाकी लोग जो कि इस वक्त नहीं है हमारे साथ, ये वो भी सुनेंगे, उनको भी सुनना पड़ेगा। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, इस रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आई अप्रिशिएट। ओके, तो मैं बात ये कर रहा था कि आईपी क्या करती है, इनकैप्सुलेट द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। आईपी लेयर क्या करती है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट, या से मैंने भी कहा इधर इट विल बी अ सेगमेंट और इट विल बी अ यूडीपी डेटाग्राम। इट विल बी अ यूडीपी डेटाग्राम. Now this will come to the IP layer, and this is all is here. This all is here. This one, and we will call it as the payload, or we may call it the PDU. ऊपर से PDU आया. Now मैं अपने 20 bytes इसके साथ ऐड कर as a header, because now I am on the network layer. और यहां से भी आपके सवाल को और फायदा मिलेगा आसिफ, इसके इन नेटवर्क लेयर ने इसके अंदर सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी ऐड किया। तो जब तक ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता इट हैज ए मीनिंग, जब तक ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता दिस हैज ए मीनिंग। क्या उसने जवाब देना है, अगर ये हटा दिया गया तो जवाब कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको हटाया ना जाए। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि जी आईपी इनकैप्सुलेट्स, यानी आईपी लेयर इनकैप्सुलेट द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट और द यूडीपी डेटाग्राम। फिर हमने कहा आईपी कैन यूज ईदर IPv4 और IPv6। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, और अभी आपने देखा भी कि मेरे कंप्यूटर के दो एड्रेसेस हैं, IP वर्जन 4 का भी, IP वर्जन 6 का भी। So it means I can use either IPv4 or IPv6. So packets and not impact the layer 4 segment. इसका मतलब कि लेयर 4 के सेगमेंट की कोई, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर की कोई ऐसी बात नहीं, ये आईपी ने डिसाइड करना है कि whether it will be using IP version 4 or it will be using IP version 6. यानी either it will be adding 32 bits of addresses or it will be adding 128 bit of addressing. Then IP packet will be examined by all layer 3 devices. By layer 3 devices I mean routers. Either it is the routers or they are the layer 3 switches. Layer 3 switches. So gentlemen, हर राउटर के पास, मिसाल के तौर पे ये एक राउटर है, इसके पास ये एक स्विच लगा हुआ है। आपने ये दोनों चीजें देखी हुई है, राउटर R1, स्विच S1, और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं चाहे वो डेस्कटॉप्स हैं। Now this router is connected to another router, then it is connected maybe as to a switch, and number of devices are here. So whenever this packet is generated by this laptop, for example, will go to the switch, because it will find that the destination is not local, it is remote. It may be in US, you are in Pakistan. So you will add the source address and destination address to the packet and will send it to the router R1. Router R1 will use its routing table, and will forward, because यहाँ तो मैंने सिर्फ दो ही रास्ते बताए, but router can have multiple paths. So it has to decide whether to use path number 1
2, 3, 4. Definitely cannot be the back one. Can never be the this one क्योंकि इधर से तो आया है. ठीक है. So gentlemen, it will choose the best path by using its routing table and will find that 3 is the good one. 3 is connected to the destination. It will give it to the next router, which is router 2. Router 2 have also number of interfaces. So again, it will use its routing table and will check that not 1, not 2, not 3, yes 3, not 4, not 5, and not 6. So it will choose number 3 path and will give it to the switch. And switch will use the, ARP and will find the destination is here. So a packet from a laptop in Pakistan will reach to a desktop in US. So what has been done? Who did this major task? These routers, layer 3 devices. Layer 3 devices. So gentlemen, IP packet will be examined, as I said. Examine means the destination, examine means the destination IP. It will look at the destination IP, then will use its routing table and will choose the best path, the right interface, and will forward. And then is the IP addressing does not change from source to destination. Source से destination तक जब ये पैकेट जा रहा है उसका ना सोर्स आईपी बदलेगा क्योंकि इसका मतलब तो ये जिसने भेजा है आप उसको बदल रहे हो. नो, इट इज नॉट अलाउड. सोर्स बदल दिया रास्ते में तो जवाब किसी और पहुंच जाएगा फिर, और ना ही आप डेस्टिनेशन आईपी इंक्रीज चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर डेस्टिनेशन तब्दील हो गया तो पैकेट जो कि यूएस के लिए था it may go to Russia, it may go to Germany. So that is not allowed, that is not desired. That is the reason he is saying that IP address does not change from source to destination. However, there is a way जहां पे सोर्स का आईपी तब्दील कर दिया जाता है और इस अमल का नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. लेकिन इस पे हम बाद में बात करें. लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं क्योंकि अभी हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपीज नहीं पढ़े हुए. अभी हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपीज नहीं पढ़े हुए. तो जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो सब के सब प्राइवेट आईपीज यूज कर रहे हैं. हम तो सब के सब मेजॉरिटी जो है वो तो प्राइवेट एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जिसको नेटवर्क पे जाने की, इंटरनेट पे जाने की इजाजत ही नहीं है. उसको एक पब्लिक आईपी चाहिए, उसको एक पब्लिक आईपी चाहिए और ये काम करेगा नेट. जस्ट टू गिव यू दिस कि आप मेरी इस बात से इत्तफाक कर जाएं, जस्ट इससे इत्तफाक कर जाएं. अभी मैंने बताया कि मेरा आईपी क्या है. मेरा आईपी है 192.168.60.18.6. मेरा आईपी है लेडीज एंड जेंटलमैन. सॉरी लेडी तो तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही आज हमें आयशा ने, दिलावेज ने और सुमैया ने ज्वाइन ही नहीं किया. सो लेकिन आपने देखा कि मेरा आईपी क्या है 192.168.18.6. आप भी करके चेक कर ले, मैंने अपने पास नोट कर लिया कि मेरा आईपी है. मेरा आईपी वर्जन 6 का आईपी जो है वो ये है 220.2400 ये जी. तो दोनों आईपी में डुअल स्टैक, मेरे पास आईपी वर्जन 4 भी है, मेरे पास आईपी वर्जन 6. नाइस.
लेकिन मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं जेंटलमैन वो ये है कि मैं आता हूं ब्राउजर पे और ब्राउजर को कहता हूं माय आईपी एड्रेस मुझे बताओ, माय आईपी एड्रेस। आप भी करके देखें माय आईपी एड्रेस। तो जेंटलमैन ये कह रहा है कि आपको जो आईपी मिला हुआ है वो ये है। थोड़ा इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, क्या ये दोनों एक हैं? इसके अलावा ये मेरा आईपी वर्जन 4 पे अगर मैं कहूं तो मुझे इसी में बताओ, चेकिंग में इस वक्त ये देख लो जेंटलमैन, मुझे जो आईपी मिला हुआ है ग्लोबली, क्या मुझे कोई बता सकता है? अरसलान, इलियास, जिहाद, कोई भी बता सकता है कि मैं इन दोनों के आपके सामने रखता हूं, क्या ये दोनों एक ही हैं? नो सर। नो सर, यही सुनना हाँ चाहता हूं। सर। वेरी नाइस। तो बेसिकली ये वाला आईपी जो मेरा है 192.168.18.6, ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन मैं आपके कंप्यूटर के साथ जिस एड्रेस से कनेक्टेड हूं वो ये 192.140.148.165। तो ये दरमियान में एक मशीन काम कर रही है जिसका नाम है नेट, वो मेरा ये आईपी तब्दील कर देती है, क्योंकि इस एड्रेस से मैं, इस एड्रेस के साथ मैं दुनिया से बात ही नहीं कर सकता। 192.168.18.6 के साथ मैं सिर्फ लोकल एयर नेटवर्क में बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे जिहाद को अपनी अपना मैसेज पहुंचाना है, मुझे आसिफ को देना है, लियास को देना है, अरसलान को देना है, देन आई नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर मुझे फेसबुक पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, जीमेल पे जाना है, आई नीड अ पब्लिक आईपी। तो इस प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्जन का एक तरीका है जिसको नेट कहते हैं। डिटेल में बताऊंगा, फॉर टाइम में जस्ट मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बताया ताकि आपकी स्लाइड में ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि नेट विल चेंज एड्रेसिंग, बट विल बी डिस्कस लेटर इन मॉड्यूल। तो हम इसको लेटर डेफिनेटली वी विल लुक एट इट इंशाल्लाह। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? यस सर, क्लियर। हाँ वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। नंबर 1, कनेक्शनलेस। नंबर 2, बेस्ट एफर्ट। एंड नंबर 3, मीडिया इंडिपेंडेंट। कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर कोई शख्स आपको कोई लेटर भेजना चाहता है, ईमेल नहीं कह रहा, लेटर कह रहा हूं, पोस्ट ऑफिस के जरिए, तो क्या उसको पहले ये मालूम करना जरूरी है कि वाकई डेस्टिनेशन है भी कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर अगर मैं एड्रेस ये लिख दूं, मैं उस पर एड्रेस लिख दूं अरसलान। अरसलान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर सवाबी का। सवाबी का, चलिए ठीक हो गया। अरसलान सवाबी से मैं इसका एड्रेस यूं लिखता हूं, अरसलान, चले मैं ज्यूम कर लेता हूं अरसलान पिशावर और हैदराबाद का, क्योंकि मुझे वहां के की गांव और स्ट्रीट्स के मोहल्लों के नाम नहीं आते। तो मैं कहता हूं अरसलान, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं फेज 20, सेक्टर 2000। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं, एड्रेस लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं हाउस नंबर 1 मिलियन, और नीचे लिख देता हूं यूनाइटेड वाशिंगटन डीसी और यूएस, वाशिंगटन डीसी और फ्रांस।
किसी का एक दूसरे का तलक ही नहीं है। अगर हैदराबाद कहते तो वहां पे 20 फेजेस नहीं है, वहां पे 2000 सेक्टर्स नहीं है, वहां पे 1 मिलियन घर नहीं है, वहां पे वाशिंगटन डीसी में ये सारी चीजें वाशिंगटन डीसी में नहीं है, वाशिंगटन डीसी फ्रांस में नहीं। लेकिन अगर आप ये खत पे लिफाफे पे डाल दें और उसको लेटर बॉक्स में जाके गिरा दें, nobody stops you. They will only look at first France. ठीक है, ये खत फ्रांस चला जाएगा, वहां पे वो परेशान होंगे कि इधर तो कोई वाशिंगटन डीसी नहीं। इसका मतलब है कि पहले कोई कनेक्शन फ्रांस तक खत पहुंच गया, लेकिन फ्रांस तक खत पहुंच गया, लेकिन कोई पता ही नहीं था कि अरसलान जो है वो इस जगह पे मौजूद भी है कि नहीं, हम खत भेज रहे हैं अरसलान को। इस किस्म के कनेक्शन को कहते हैं कनेक्शनलेस। इसके मुकाबले में जेंटलमैन, एक दफा फिर 10 मिनट के बाद क्लास खत्म होगी तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 4 लोग हैं, अदरवाइज हमें एक और इसका पीस लेना चाहिए, लेकिन हम उनको भी ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहते और आपको भी फायदा देना चाहते हैं। तो 10 मिनट और हैं, वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड देन आई विल से अल्लाह हाफिज टू यू, ताकि आप भी अपनी उसकी तैयारी करें फाइनल एग्जाम की और आपको भी नुकसान ना और हो भी जाएंगे तो अराउंड 350, तो नॉट बैड। तो जेंटलमैन, मैं कनेक्शन लेस के मुकाबले में कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में बात करना चाहता हूँ, कनेक्शन ओरिएंटेड, ताकि आपको दोनों में फर्क समझ आ जाए। जेंटलमैन, इलियास होता क्या है कि अगर ये आपकी मोबाइल है, ये है मोबाइल इलियास की, और इलियास जो है वो कॉल करना चाहता है जिहाद। इसका कोई नंबर है, तो आपने देखा होगा कि जब आप नंबर को डायल करते हैं, इलियास नंबर डायल करता है, एकदम कॉल नहीं मिलती, समथिंग आपकी तरफ से जितने भी दरमियान में रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले वो देखा जाता है कि वहां पे रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर हैं तो दे बिकम्स डेडिकेटेड फॉर यू। पहले ये रिसोर्स, फिर दूसरा रिसोर्स, एंड फाइनली ये देखा जाता है कि जिहादी इलियास की कॉल उठाना चाहता है या नहीं। बाजू का रिंग बज रही होती है, लिखा हुआ आ रहा होता है कि इलियास, कहता नहीं उठा। तो इसका मतलब यह है कि पहले ही इस बात का ये डिफाइन किया जाएगा कि जिहाद विलिंग है और दरमियान में रिसोर्सेज का दोनों एंड के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिससे वॉइस जाएगी और जिससे वॉइस आएगी, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। इस किस्म के कनेक्शन को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन आईपी नेटवर्क्स में मिसाल के तौर पे आप ईमेल करते हैं, कोई पता नहीं होता कि ईमेल ठीक भी है कि नहीं है, बाजू का आपसे खुद गलत लिखा जाता है। आपने मिसाल के तौर पे लिखना होता है एहसान हक @gmail.com और आप एहसान हक की बजाय एहसान हक 2 लिख जाते हैं गलती से। हो सकता है किसी का आईपी ना, किसी का ईमेल ही ना। दैट इज समथिंग दैट इज कनेक्शनलेस। ये नहीं देखता, ये उसमें डाल देगा, जहां तक पहुंच सकता है पहुंचेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये gmail.com आपने लिखा है, जीमेल के सर्वर पे जाएगा, वो देखेगा उसके पास एहसान हक 2 नहीं है, बस बात खत्म। जैसे अभी हमने कहा अरसलान को हमने भेजा खत और उसका कंट्री का नाम फ्रांस लिख दिया, खत तो जाएगा फ्रांस, लेकिन फ्रांस वाला देख के हैरान होगा कि यहाँ तो वाशिंगटन डीसी नहीं है, यहाँ तो कोई हाउस नंबर 1 मिलियन नहीं है वाशिंगटन डीसी में, तो समझ वो उसको हो जाएगा गलत है, वो वहां पे इसको ड्रॉप कर देगा। यहां पर भी ये होता है कि इट इज कनेक्शनलेस। आई होप आपको समझ आ गई कनेक्शनलेस किसे कहते हैं। yes, अब ये क्वेश्चन भी बनता हुआ है कि आखिर को कनेक्शनलेस रखा क्यों है। टू मेक इट सिंपल, लाजमी तौर पे यहाँ पे आप और कई प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हो, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, you use a complete signaling mechanism
you use a complete signaling mechanism. मिसाल के तौर पे SS7, which is a signaling method used in the telecommunication, जिसका काम ये है कि जब आप कॉल करें तो टाइम ले, लेकिन इस चीज को एस्टैब्लिश करें, इस चीज को गवर्न करें, इस चीज को इंश्योर करें कि तमाम जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं उन पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो रिसोर्सेज आपके लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं, वो रिसोर्स आपके लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं। और एंड डिवाइस भी जो है, जिहाद भी जो है, ही इज विलिंग, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, कोई एक चीज भी ये नहीं है, तो आपको कॉल नहीं मिलती, बात खत्म। तो टू मेक इट द सिंपल, the IP networks went for the connections. फिर what mean with the best effort? Best effort या connectionless तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन दो मुख्तलिफ नाम है। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, आपने देखा होगा कि आप लेटर बॉक्स तो देखा होगा ना सबने, आपकी यूनिवर्सिटी के बैकएंड के ऊपर ही पोस्ट ऑफिस बॉक्स लोकेशन है, जहां पे मुख्तलिफ पड़े हुए हैं लेटर बॉक्सेस डिफरेंट कलर्स के। नॉर्मली 3 किस्म के होते हैं, ये सर देखा है, कर्ट एलियास। एक लोकल के लिए नॉर्मली होता है, लोकल के लिए यानी विद इन पिशावर, एक विद इन द कंट्री और एक इंटरनेशनल। अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने मुल्क में ही सवाबी खत भेजना है, तो बस आप खत लिखें और इधर डाल, विद दिस होप ये पहुंच जाएगा। लेकिन होप है, पहुंचे या ना पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। दैट द रीजन हम इसको कहते हैं इट इज बेस्ट एफर्ट। हम अपनी तरफ से प्रोटोकॉल अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि डेस्टिनेशन को मिल जाए, मिल गया तो यू आर हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, ना मिले तो कोई गम नहीं करना, कोई गिला नहीं करना। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कनेक्शन लेस है, ये बेस्ट एफर्ट। इसी तरह जेंटलमैन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट क्या मतलब है इस चीज को? जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार आपके लिए आपका टीसीपी आईपी सूट का डायग्राम बनाता रहता हूं कि ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका नेटवर्क लेयर है, ये आपका डेटा लिंक लेयर है और ये आपका फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर पे मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। इट कैन बी अ गाइडेड मीडियम, इट कैन बी एन अनगाइडेड मीडियम। आपको किसी को भी जब एप्लीकेशन अपना डेटा भेज रही होती है, उसको नहीं पता होता कि क्या वो गाइडेड से जाएगा, क्या वो गाइडेड से जाएगा या वो अनगाइडेड से जाएगा, उसको नहीं पता। इसी तरह अगर वो गाइडेड है तो क्या वो कॉपर होगा, नहीं पता। क्या वो फाइबर होगा, नहीं पता। क्या वो ट्विस्टेड पेयर होगा, कोएक्सियल होगा, नहीं पता। क्या वो एयर होगा, नहीं पता। क्या वो वाटर होगा, नहीं पता। क्या वो वैक्यूम होगा, नहीं पता। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर इन बातों से इंडिपेंडेंट है, आजाद है। उसको इस चीज का गम करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो ये चेक करे कि क्या किस मीडियम पे जाएगा। आपको पता है, मिसाल के तौर पे अगर आप अभी देखें तो आपका लैपटॉप इस वक्त, अगर आप लैपटॉप से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आपका लैपटॉप, या हो सकता है आप मोबाइल के जरिए कनेक्टेड हो, मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, तो जेंटलमैन लैपटॉप आपका वायरलेसली कनेक्टेड। इसके बाद अगर लैपटॉप जो है एक्सेस पॉइंट पे आ गया, एक्सेस रूटर पे आ गया, एक्सेस रूटर से अब यहाँ पे वायरलेस था, यहाँ पे वायरलेस था, यहाँ पे वायर के जरिए, फाइबर के जरिए मिसाल के तौर पे, जो कि गाइडेड है, जो कि वायर्ड है, इसके जरिए आप अपने ऑपरेटर के पास चले गए। ऑपरेटर के ने आगे और आपका आईएसपी एक और फाइबर के जरिए आपको दुनिया के साथ मिला दिया। इसलिए हम कहते हैं कि आपके लैपटॉप को, आपकी आईपी लेयर को ये गम नहीं है
कि आगे मेरा वायरलेस होगा या वायर्ड होगा, कॉपर होगा या टिश्यू पेयर होगा या फाइबर होगा, कोएक्सियल होगा। नहीं, ये हमारा गम नहीं है, ये नेटवर्क लेयर का गम नहीं है। ठीक है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन इस वक्त बात समझ आ गई? शाबाश, वेरी नाइस, Yes, sir. वेरी नाइस। तो अगला जो टॉपिक है वो इसी की एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, लेकिन आई हैव लेस देन अ मिनट नाउ, तो मैं उसको स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि वही बता रहा है कि कनेक्शन लेस किसे कहते हैं, वही बता रहा है कि लेटर को आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये पहुंच जाएगा, बस ये इसी उम्मीद वाले तरीके को क्या कहते हैं, कनेक्शन। तो आप इसको रीड भी कर लें, कल भी हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह, और हम इसको आगे लेकर भी जाएंगे।